Assalamu alaikum, everyone. In this video, we are going to cover this paper, March 2022, paper 3, inshallah. So let's begin. You have your paper 3 in a few hours. I hope this video helps you for that as well. Let's quickly go through the solution for this paper. This is March 2022, paper 3. Make sure that you remember the instructions. You have to make sure that all of your answers are correct to 4 significant, all of your working is correct to 4 significant figures. At least 4 significant figures से आपने कम working कहीं पे नहीं करनी है. Otherwise आपके final answers नहीं सही आएंगे. And you also have to make sure that you show all necessary working clearly. Do not skip working because that will make you lose marks for no reason. Okay, so make sure that you don't do that. All right, let's start with this. So first of all, we've got this modulus question. We have to solve this inequality. What do we do with this? We've got a standard process for this. We say, let's treat this as an equation. And it's going to be like this: 2x plus 3 modulus that equals 3 into x plus 2. We put plus minus on any one of the two sides. So 2x plus 3 equals plus minus 3 into x plus 2. We can break it down into two parts now. 2x plus 3 equals 3x plus 6, or 2x plus 3 equals minus 3x minus 6. Okay, and then we find the values of x from both of them. From the first equation, we get x equals minus 3, and from the second one, we get 5x equals minus 9, and x equals minus 9 over 5. Okay, so these are two values that we're getting. What do we do now? We draw a number line, and we check which regions satisfy on the number line. So we have this number line. The smaller point comes on the left side, that is minus 3. The bigger, the larger point comes on the right side, that is minus 9 over 5. Now, since this is modulus in both sides, we can actually just check the middle region, and that will be enough. हम दरमियान वाला region check कर लें. दरमियान वाले region के अंदर कौन सा point ले सकते हैं? We could take, so remember this is minus 1.8. So minus 1.8 or minus 3 के दरमियान में कोई point ले लें. We could take, let's say minus 2. Let's try that. Minus 2 input कर देते हैं inequality के अंदर. What was the inequality? We've got this inequality here. इसके अंदर minus 2 input करके देखते हैं. Let's see what we get from that. 2 into minus 2 plus 3. So modulus, that's greater than 3 into modulus of 2 plus 2. In fact, minus 2 plus 2. What do we get from this? We get minus 4 plus 3, the modulus of that. So that's minus 1 for modulus. That's greater than 3 times 0. And that gives us 1 greater than 0. That means this region is correct. So this region in the middle is correct. Since we have modulus in both sides, इसमें आपको सिर्फ दरमियान वाला region check करना enough होता है. अगर दरमियान वाला region ठीक है, it necessarily means sides वाले region incorrect होंगे. आप verify करना चाहें तो कर सकते हैं. In this case as well, लेकिन जब भी दोनों साइड से modulus होता है, आप दरमियान वाला चेक कर लें. That's going to be enough. अगर दरमियान वाला सही है तो साइड वाला रीजन गलत होंगे. दरमियान वाला रीजन गलत है तो साइड वाला रीजन सही होंगे. ठीक है, you can just do it like this. So the middle region is correct. So what's your final result then? The final answer is going to be x between minus 3 and minus 9 over 5. That's how you write your final result here. Okay, so that's your final answer. Let's move on to the next one. We have this sketch of an Argan diagram on which we've got to shade the region whose points represent complex numbers z satisfying these inequalities. We've got these two inequalities. Okay, the first thing that we've got to do here is we've got to convert it to our standard form. इसकी standard form हमारे पास क्या होगी? इसको हमने लिखना है z minus something. इस form के अंदर लिखना है. ये जो पहले वाली inequality. Okay. अच्छा, left side को इस form के अंदर लिखना है. How do you do that? You take minus common, so you have z minus 2 plus 3 iota. Modulus of that is less than or equal to 2. So you can write this inequality like this. On the right side, ये inequality तो आपकी already standard form में, you can say this is the argument of z minus 0. That is less than or equal to 3 over 4 pi.
Okay, so these are the two loci that we've got. ये first वाले का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप एक point बनाओगे -2 + 3 iota, उससे जो distance है वो 2 से कम होना चाहिए, या 2 के equal हो सकता है, 2 से कम होएगा. Now let's draw an Argan diagram here. I'm going to draw this grid here on the side. Let's draw this here. We've got this Argan diagram. We've got the imaginary axis here. And we've got the real axis here. सबसे पहले आपको क्या करना है, point plot करना है -2 + 3 iota. Okay, so it's going to be on the left side. Let's draw a scale here. -2, 0, 2, -4, 2, 4. It's better to draw a scale in which both the axes have, so it's better to have a scale in which both axes have the numbers written on at the same distance. दोनों sides पे same scale होना चाहिए basically. Approximately, you don't have to be very exact. It's okay. -2 + 3 iota, that's going to be this point here. -2 + 3 iota से इस point से आपका distance जो है वो 2 के equal या उससे कम होना चाहिए. Okay, so आप क्या करोगे, इसका locus क्या होगा? It's going to be a circle. It's going to be a circle of radius 2. 2 radius का आपका एक circle बन जाएगा. You can draw that here. But this point here, and this here, this here, this here. It's going to look something like this. I would recommend that you draw it using a compass when you do it in your exam, because इससे आपकी थोड़ी सी neatness हो जाएगी. Although it's not required, but it will look more like a circle. So that's how your locus will look for this first inequality. You can be anywhere within the circle. A circle के अंदर कहीं पे भी हो सकते हो, ठीक है? A circle के अंदर आप कहीं पे भी हो सकते हो. That's the first inequality. अब ये second inequality का क्या मतलब है? एक तो आपके पास एक condition आ गई, circle के अंदर आपने कहीं पे रहना है, ठीक है? Now the second inequality says the argument of z from the point 0 that is less than or equal to 3/4, 3 pi over 4. तो आप क्या करोगे? origin के ऊपर रख के आप एक लाइन ड्रॉ करोगे राइट साइड के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन. इससे आपने एंगल मेजर करना है कितना? 3 pi over 4. You can think of it in degrees. 3 pi over 4 is basically equivalent to 135 degrees. यहाँ से आपको एंगल मेजर करना है 135 degrees. Okay, so it's going to be somewhere in this direction. So basically ये आपका लेफ्ट साइड पे इस तरह से आएगा. It's going to be a line that looks like this. This is how this line is going to look like. Okay, so this is the line at which the argument is 3 pi over 4. Now, why have I drawn it like this? Why have I passed it through this point? This is the point -2 and 2. You see, the angle here is 45 degrees. 45 degrees or pi over 4. इसका मतलब ये है कि जितना distance आप horizontally travel कर रहे हो, उतना distance आप vertically travel करोगे. When the angle is 45 degrees, तो 2 unit left जा रहे हो, अगर आप 2 unit ऊपर जाओगे, तो इस point से यहाँ पे pass कर रहे होगे. ठीक है? So इसको circle के center से pass नहीं कराना, उसके नीचे से pass कर रहे होगे. ठीक है? Now it says the angle, the argument has to be less than or equal to this. अब देखें. Sorry about that. Yeah. So the argument has to be less than 3 pi over 4. So if you think about this, angle आपका इस line के ऊपर कितना है? This angle is 3 pi over 4. What you want is, you want the angle to be less than or equal to this. इसका क्या मतलब है? इस line के आप इस side पर होगे. इस line के आप इस side पर होगे. Okay? So you have to be inside the circle and above the line. So what is the region that satisfies both of these conditions, above the line and inside the circle? That's basically this region. Circle के अंदर और line के ऊपर. This is the region that you're going to shade there. That's what satisfies both of those conditions. All right, let's move on. ये आपने सिर्फ यहाँ पे ये करना था, आपने region shade करना था. Let's move on to the next part. Okay, question number 3. Now this is logarithms, a linear law basically. The variables x and y satisfy the equation x raised to power n y square
equals C, where N and C are constants, the graph of L and Y against L and X. So that's important. L and Y is on the vertical axis, L and X is on the horizontal axis. Okay, so keep that in mind. It's a straight line that passes through these points. आपको points नजर आ रहे हैं वहाँ पे. Find the value of N. You need to figure out the value of N and the value of C. Both of them have to be correct to two decimal places. यहाँ पे question के अंदर instruction दी हुई है. It's necessary to follow this, otherwise we'll lose marks there. Okay, तो हम क्या करेंगे? इस equation को लिख लेते हैं यहाँ पे. It's x raised to power n y square equals c. That's what the equation is. सबसे उसको उस form के अंदर convert करना है. Y equals mx plus c form के अंदर. That's what you want. और उसने क्या कहा है? Y की जगह पे क्या आना चाहिए? Y की जगह पे आपके पास आना चाहिए L and Y. Right? That's what you got in the vertical axis. X की जगह पे क्या आना चाहिए? You should have L and X. So हम क्या करते हैं यहाँ पे? इस equation का log ले लेते हैं. So we take log on both sides. Let's take log on both sides and see what we get from that. Ln of x raised to power n into y square equals ln of c. Now we can break it down using the multiplication law. ये क्या हो जाएगा? It becomes ln x raised to power n plus ln y square, that equals ln of c. Okay, and now this becomes n into ln of x plus 2 ln y equal to ln of c. That's what we get. अब हमें क्या चाहिए? Subject बनाने. ln y left side पे होना चाहिए. So we keep ln y on the left side and take everything else to the right side. So इसको पहले लिख लेते हैं. 2 ln y, that equals minus n ln x plus ln c. And then we divide this 2 on the other side. A lot of people forget about this. 2 आपने जाके divide करना है. L and Y आपको चाहिए सिर्फ left side के ऊपर. Nothing else with that. So 2 जाके वहाँ पे divide होएगा. So it becomes L and Y equals minus n over 2 times ln x plus ln c over 2. And now this is the form that we needed. This is y equals mx plus c. If we compare the two, in place of the gradient, we've got minus n over 2. And in place of the vertical intercept, the y-intercept, we've got ln c over 2. Okay? इन दोनों से हम values निकाल लेंगे. हम सबसे पहले क्या करते हैं? Gradient निकाल लेते हैं. ये दो points दिए हमें. इन दोनों points को use करके we can find the gradient of this line. Let's find that. Let's call that m, the gradient of this line. 1.21 minus 0.91 divided by 0.31 minus 1.06. Now let's see what that turns out to be. 1.21 minus 0.91 divided by 0.31 minus 1.06. This is giving me minus 0.4 exactly. Minus 0.4. That's the value of gradient that I'm getting. जब gradient minus 4 आ गया, उसका मतलब क्या हुआ? Minus n over 2 equals m. Minus n over 2 equals minus 0.4 because that was the value of the gradient that we found there. यहाँ से आपके पास n की value आ जाएगी. ठीक है, so n will turn out to be 0.8 from here. That's the value of n. ये आ गया आपके पास. Once you've got the value of n, now you can see how you can find the value of this capital C that you've got here. आप क्या कर सकते हैं? Now there could be multiple ways of thinking about it. One way is आप एक point ले लें. आपके पास ये है ln y equals minus n over 2. You know the value of n now. N is 0.8, that over 2, into ln x plus ln c over 2. What we can do is we can input one of those points here. इनमें से कोई भी एक point वहाँ पे जाके input कर दें. But keep in mind, ये point x और y को represent नहीं कर रहे. ये point क्या represent कर रहे हैं? This is ln x, this is ln y. So ln x और ln y की जगह पे वो आपने input कर देना. So you can use any one of the 2 points. Let's say I'm using this one, 0.31 and 1.21. Let's input that here, 0.31 and 1.21. ये input कर देते हैं. Now again, you have to keep in mind this is supposed to be ln x, this is supposed to be ln y. ये इनकी values हैं. इसमें जाके input कर दें. Input करते हैं हमें क्या मिलता है? 1.21
equals minus 0.4, that's basically minus 0.8 over 2 into ln x. ln x की value क्या है? 0.31 plus ln c over 2. You can simplify this and see what you get. ln c मेरे पास यहाँ से आ जाता है, let's calculate that, 1.21 plus 0.4 into 0.31 multiplied by 2. ln c turns out to be 2.668 for me. Okay. And then c is going to be e raised to power this time, 2.668. Let's evaluate this. C की value हमारे पास क्या आ जाती है? E raised to power this, e raised to power, e raised to power this. This turns out to be 14.41 for me. Now keep in mind, उसने क्या कहा था? 2 decimal places. तो answer आपका 2 decimal places तक होना चाहिए. It turns out to be 14.41 for me. C की value हमारे पास आ गई 14.41. N को भी वैसे तो ये 0.8 exact है, तो that will be okay. But if you want, you can also write it as 0.80. Just to be sure, ये भी आपका 2 decimal places तक आ गया. These are the values of N and C that you had to figure out. All right, so that was this question number 3 from this paper. Let's move on. Okay, so now we've got differentiation, it seems, yeah. So the parametric equations of a curve are given like this. We've got 2 equations. We have to find dy over dx, and you have to prove that dy over dx equals this thing. Okay, सबसे पहले तो dy over dx find कर लेते हैं, उसके बाद हम prove करेंगे कि उसके equal है. How do you find dy over dx in parametric equations? सबसे पहले आप dx over dt find कर लें. dx over dt. 1 का derivative is just 1 minus cos theta. Cos का derivative is minus sine, so this is going to become sine theta. Okay, so we can just do it step by step. dx over dt क्या हो जाएगा? Minus into cos का derivative. Cos का derivative is minus sine theta, so that turns out to be sine theta. That's the derivative. That's dx over dt. Okay, अच्छा. Let's find dy over dt. Cos theta, the derivative of cos is minus sine theta. Minus 1 over 4 cos 2 theta, क्या करेंगे? 1 over 4. Cos के derivative again is minus sine, so this becomes minus sine 2 theta. And then you multiply by the derivative of what is inside here. 2 theta का derivative क्या होगा? 2. We also multiply by that. Let's simplify this. We get minus sine theta plus 2 and 4, they get cancelled. You get 1 over 2 into sine 2 theta. This is dy over dt. So we've got dx over dt and we've got dy over dt. दोनों आ गए आपके पास. अब dy over dx क्या हो जाएगा? उसको हम chain rule use कर लेंगे. We get dy over dx equal to dy over dt into dt over dx. Okay, what's dy over dt? That is minus sine theta plus 1 over 2 sine 2 theta multiplied by dt over dx. That's basically reciprocal of this thing. It's a reciprocal, which is going to be 1 over sine theta. ये आपके पास dy over dx आ गया. अगर उसने सिर्फ differentiate करने के लिए कहा होता, हम इसको थोड़ा सा simplify कर देते, and you could leave it like that. But you're basically asked to show something, show a specific form. आपको ये form exactly इस तरह से show करनी. So you can't leave it like this, right? You can't leave it like this. आपको क्या करना पड़ेगा? उस form में convert करना पड़ेगा. Now what do we have here? We've got half theta. यहाँ पे आपके पास 2 theta भी आ रहा है, theta भी आ रहा है. वहाँ पे half theta आपको चाहिए. So basically double angle identities आपको use करनी पड़ेंगी. Maybe multiple times. Let's do it step by step. पहले तो sine 2 theta को simplify कर लें. Sine 2 theta क्या होता है? We've got this identity given in the formula sheet. Sine 2a is equal to 2 sine a cos a. इसको पहले उसमें convert कर दें. So this becomes minus sine theta plus 1 over 2. Sine 2 theta can be written as 2 sine theta into cos theta multiplied by 1 over sine theta. That's what we have. Now 2 and 2 get cancelled. What are we left with? We're left with minus sine theta plus sine theta cos theta. And we have 1 over sine theta here. We can write that as a fraction now.
because ऊपर से fraction खत्म हो गया. It's simpler to just write it like this. ये आपके पास आ गया. Now, if you think about this, you can actually just take sin theta common. हम sin theta common ले लें. So how does that help? That will help us cancel out sine altogether. We'll be left with -1 plus cos theta here, divided by sine theta. Now sine theta and sine theta get cancelled. And we have -1 plus cos theta. ये आपके पास आ गया. ठीक है, ये आपके डेरिवेटिव तो आ चुके हैं. अब आपने क्या करना है, इसको किसी तरह से आपने चेंज करना है. -2 sin square half theta के अंदर. ये आपने प्रूव करना था इसी तरह से. Now, how can we go from this form to the form that's given there in the question? अब देखें, यहाँ पे थीटा है, ये हाफ थीटा है. So basically एंगल का हाफ हो रहा है. तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. Remember cos की डबल एंगल आइडेंटिटी क्या होती थी? I'm going to write that on the side here. Cos 2a was so there are 3 different forms for that. हमें यहाँ पे साइन चाहिए, तो साइन वाली फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ. आप बाकी फॉर्मूला शीट में देख सकते हैं. साइन वाली फॉर्म होती है 1 - 2 sin square a. Right? That's how the sine form looks like. But we don't have 2 theta here, we just have theta. तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इसी को इस तरह से लिख लो, अगर 2a की जगह यहाँ पे a होता, तो राइट साइड पे एंगल क्या होना होता है, जो भी लेफ्ट साइड पे इधर एंगल आ रहा था उसका हाफ राइट पे होएगा. राइट? सो इफ यू हैव a on the left side, what are you going to have on the right side? Okay, why does it happen? Yeah, so if you have a on the left side, what are you going to have on the right side? On the right side, you're going to have a over 2. So basically, cos theta की जगह आप क्या लिख सकते हो? Cos theta की जगह आप लिख सकते हो ये पूरी चीज. Okay, so what I'm going to do is I'm going to write cos theta as 1 minus 2 sin square theta over 2. That's how cos theta can be written using this double angle identity. Okay. Now, once you've done that, -1 and +1, they get cancelled. What are we left with? We're left with -2 sin square theta over 2, which is just half theta. And that's what you have to prove. This is dy over dx. ये आपको prove करना था, and you've got that. All right. It was slightly tricky because यहाँ पे half theta आ गया, but you have to understand के हाफ थीटा के लिए भी आपको डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करते हो. बस आपने दोनों साइड्स पे एंगल जो है वो 2 से डिवाइड कर दिया essentially. All right, so that's what you have to do here. Let's move on. Question number 5. Okay, so we got trigonometry. Angles alpha and beta, they lie between 0 and 180 degrees and are such that tan alpha plus beta equals this, and tan alpha equals 3 tan of beta. We have to find the possible values of alpha and beta. Now, it's a similar question to a number of others that have come in the past papers as well. It's a standard process. आपने बस identities apply करनी है. Let me just show you the formula sheets. Formula sheet. ये आपके पास सारी identities होती हैं. ठीक है? So you've got all of these identities given here. हमें tan वाली use करनी है, तो basically हम ये compound angle identity यहाँ पे use कर रहे होंगे. So whenever you're doing this question, questions like these जहाँ पे identities use हो रही हैं, आपने formula sheet अपने सामने रखनी है. Even if you remember the formulas, आपने फिर भी ये सामने रखनी है just to make sure that you don't do any careless errors. Okay, I'm going to write down this identity here on the side. Tan a plus b की identity क्या होती है? This is basically given by tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. That's the identity that we've got for tan a plus b. तो हम क्या करते हैं, इस first equation को expand कर लेते हैं सबसे पहले. It becomes tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha into tan beta, and this equals 2. तो tan alpha plus beta को मैंने expand कर लिया using that compound angle identity. Now what I can do is I can just input this thing. इस second equation में क्या लिखा हुआ है? Tan alpha equals 3 into tan beta. वो जाके यहाँ पे input कर दें ताकि हमारे पास alpha और beta में सिर्फ एक चीज रह जाए. So I can input
tan alpha equal to 3 times tan beta there, right? What does that become? That becomes 3 into tan beta plus tan beta divided by 1 minus tan beta into tan beta, that equals 2. Now, what do we get from this? In the numerator, we have 4 into tan beta. ये जो denominator है इसको मैं right side पे यहाँ पे लेके आके multiply कर देता हूँ. So I have 2 into 1 minus tan beta into tan beta. What does that become? That becomes tan square beta. Okay. Now let's simplify this. This gives us 4 tan beta equals 2 minus 2 tan square beta. Let's take everything to the left side. 2 tan square beta plus 4 tan beta minus 2 equals 0. ये आपके पास आ गया. ठीक है. Now you can simplify this further if you want. आप 2 cancel कर सकते हो. आपके पास क्या बच जाएगा? Tan square beta plus 2 tan beta minus 1 equals 0. But now what we can do is we can actually use a substitution. आप directly करना चाहें directly भी कर सकते हैं. But हम substitution use कर लेते हैं because this is a quadratic form. हम कोई भी और letter use कर ले. Let's say instead of using tan beta, we can use B only. So हम B से refer कर देते हैं tan beta को. So let B equals tan beta. ठीक है. आप ऊपर भी शुरू में कर सकते थे ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़ता वो. But it's okay. We have 2b square plus 4b minus 2 equals 0. This is the quadratic equation. ये quadratic equation हम solve कर लेंगे और फिर हम देखेंगे बीटा के values क्या आती हैं. Now can we factorize this? B square plus 2b minus 1. Can we factorize this? This becomes no, we can't actually factorize this. ये factorize नहीं हो सकता. 1 और 1 नहीं हम यूज कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें quadratic formula यूज करना पड़ेगा. Let's use the quadratic formula for this and see what we get from that. Let me just check the working again. इसमें कोई मसला तो नहीं है because a lot of times such questions can actually be solved using factorization. Let me spot if there's any error here. Tan of alpha plus beta, that's fine. In the denominator, that's also fine. Tan alpha into tan beta, tan alpha. Yeah, so there's an error there. So why did I think there was an error? Because normally इस तरह question देखें 6 marks का question है, इसमें अगर quadratic formula भी use करना पड़ जाता है, तो values भी आपकी decimals में आ जाएंगी. It's going to become quite complicated. So I just thought there might be an error, and I actually was able to figure it out very quickly, which doesn't happen quite often. यहाँ पे हमने क्या कर दिया गलती से, ये tan alpha into tan beta था. जब tan alpha की जगह 3 tan beta input किया, I forgot to input 3 here. 3 मैंने यहाँ पे नहीं लगाया. Okay, so I need to correct that. यहाँ पे आपके पास 3 आना चाहिए था. This becomes 1 minus 3 tan beta into tan beta. And that is then going to become 3 tan square beta here. यहाँ पे भी 3 आ जाएगा. जब वहाँ पे 3 आ जाएगा तो this becomes 6. You've got to be very careful जब आप इस तरह से correction भी कर रहे होते हैं ना, आपको बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि आप हर जहाँ पे आपकी change हो रही है वो सारी करें, कोई कुछ रह ना जाए. Otherwise it's a lot of times just safer to just do everything again rather than making changes. अगर आपको थोड़ा सा भी doubt है कि आप सारी changes नहीं कर सकते वहाँ पे. Okay, 6 यहाँ पर आ गया था. And now this should have been 6 as well. And this should have been 3 here. Okay, so that's what the equation actually becomes. Now, can we factorize this now? 3 and minus 1, that becomes minus करके आपके पास 3 आना चाहिए. So yeah, so we can do that. We can do 3b square plus 3b minus b minus 1 equals 0. So now we can factorize. We have broken the midterm. Now it becomes 3b into b plus 1 minus 1 into b plus 1 equals 0. The factors that you get are 3b minus 1 and b plus 1.
What do we get from this? B equals 1/3 or B equals -1. इसका मतलब क्या हुआ? Tan beta is either 1/3 or tan beta is -1. अब आप देख लेंगे बीटा के वैल्यूज यहाँ पे क्या आती हैं. Now remember tan is positive in the first quadrant and in the third quadrant. Tan is negative in the second and fourth quadrants. लेकिन आप यहाँ पे देखें उसने अल्फा बीटा के वैल्यूज क्या दी हुई थी. उसने कहा था both of those angles are between 0 degrees and 180 degrees. So basically first और second quadrant से आगे तो आप जा ही नहीं सकते. So first और second quadrants के अंदर आपके वैल्यूज चाहिए. सिर्फ हम क्या कर लेते हैं, बेसिक एंगल फाइंड कर लेते हैं. Now again we got to be careful. अल्फा उसने ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया हुआ है किसी और चीज के लिए. तो बेसिक एंगल आप अल्फा से डिनोट करना चाहो कर सकते हो जो आप नॉर्मली करते हो, बट इट्स सेफर टू यूज अनदर लेटर ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये अल्फा और है और वो वहां पे जो अल्फा लिखा हुआ तो और है. तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल. आप यहाँ पे क्या कर लें, कोई और लेटर यूज कर लेते हैं. अल्फा के लिए मैं लेट्स यूज पी फॉर इंस्टेंस. ठीक है, अल्फा का मैं पी उठा लेता हूँ. इट्स कॉल्ड पी द बेसिक एंगल. पी को मैं कह रहा हूँ बेसिक एंगल. लेट्स फाइंड द बेसिक एंगल हियर. बेसिक एंगल निकाल लेते हैं. बेसिक एंगल आपके पास यहाँ पे क्या आता है दोनों के. लेट्स फिगर देम आउट. tan inverse of 1/3 डिग्रीज की बात हो रही है यहाँ पे. योर कैलकुलेटर शुड बी इन द राइट मोड. should be in degrees. Tan inverse of 1/3 that turns out to be 18.43. एक आपका बेसिक एंगल ये आ गया 18.43. दूसरा आपका बेसिक एंगल क्या आ गया, tan inverse of 1 that is just 45 degrees. ये आपके दोनों बेसिक एंगल आ गए. ठीक है, ये मेरे बेसिक एंगल्स आ गए. Now since this is supposed to be in the first quadrant, tan पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा. तो बीटा की वैल्यू आपके पास एक क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई 18.43 डिग्रीज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर. दिस इज वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ बीटा. हियर tan इज नेगेटिव. tan नेगेटिव या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है. सिंस वी कैन ओनली बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट क्योंकि आपकी रेंज 0 से लेकर 180 तक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लिख देंगे. 180 minus 45 degrees, that's going to be 135 degrees. That's the second value of beta. ये दोनों बीटा के वैल्यूज आ गए हमारे पास 135 degrees and 18.4 degrees. अच्छा, अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको अल्फा की वैल्यूज निकालनी है. Now we got the other relationship है. उसने क्या दिया हुआ था, उसने कहा था tan alpha. हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं. We got two values. हमारे पास एक tan बीटा यहाँ पर आ रहा था 1/3, वही यूज कर लें यहाँ पे. और दूसरा tan बीटा आपके पास आ रहा था -1. अब उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है we've got this relationship tan alpha equals 3 tan बीटा. इसको यूज करके आपके पास दो अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग. लेट्स फिगर दोस आउट. फर्स्ट वैल्यू से क्या आएगा, tan alpha equals 3 times tan beta. So 3 into tan beta. Tan beta की हम ये वाली वैल्यू ले रहे हैं अभी 1/3. What does that give us? That gives us tan alpha equals 1. Okay. What about the other one? The other one gives us tan alpha equals 3 into -1. And that is tan alpha equals -3. Again, we can find basic angles for both of them. इनके बेसिक एंगल्स फाइंड कर लें. अच्छा, अगेन बेसिक एंगल को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे. I'm just using a different letter ताकि वो अल्फा के साथ कंफ्यूज ना हो. That's the only reason. कोई भी आप और लेटर अज्यूम कर लें. tan p equals 1. बेसिक एंगल मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 45 degrees. Similarly here, let's find the basic angle. यहाँ पे मेरे पास बेसिक एंगल क्या आ गया, tan inverse of 3. That turns out to be 71.6 degrees. Okay. Now this is positive value of tan. इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो एक वैल्यू आपके पास आ गई अल्फा की, that is 45 degrees in the first quadrant. This is a negative value of tan here.
इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो. So this is going to be 180 degrees minus 71.6 degrees. That turns out to be 108.4 degrees. ये आपके पास corresponding values of alpha आ गए हैं आपके पास. ठीक है. Alpha equals 45 degrees. Then beta is 18.43 degrees. 18.43 की corresponding value आपके पास ये आ रही है. And when beta is 135 degrees, the corresponding value of alpha is 108.4. So this is what you get here from this one. Okay, so that was question number 5 here. And these are your answers for this. Let's move on. Actually, so now we've got complex numbers. Find the complex numbers W. So इसने कहा numbers, इसका मतलब multiple answers आएंगे, एक से ज़्यादा answers आएंगे. Which satisfy this equation, W square plus 2 iota W conjugate equals 1, and are such that the real value, the real part of W is less than or equal to 0. Give your answers in the form x plus y iota. अच्छा देखें, जब भी आपके पास ये W conjugate आ जाता है ना, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि आपके पास दो अननोन्स आ गए ना, एक W आ रहा है, एक W conjugate आ रहा है, तो डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, बिकॉज वी गॉट वन इक्वेशन, वी कांट फाइंड टू अननोन्स फ्रॉम दैट. आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हो, W की जगह पे ये इनपुट कर देते हो. सो W की जगह क्या इनपुट कर दोगे, लेट्स से दिस इज x plus y iota, और W conjugate की जगह पे क्या इनपुट कर दोगे फिर, x minus y iota. So you'll have to input that here, okay, and then you can solve it further. Directly करने का कोई तरीका नहीं है इसमें. ठीक है. अच्छा, let's do that. W square plus 2 iota W conjugate equals 1. Let's input those values. We've got x plus y iota whole squared plus 2 iota into x minus y iota equals 1. ठीक है. X plus y iota whole square. Let's expand that. We get x square plus 2xy iota plus y square iota square plus 2x iota minus 2y iota square minus 1 equals 0. Okay, so this is what we're getting. Let's simplify this. X square plus 2xy iota plus y square iota square. Iota square क्या होता है, -1, so this becomes minus y square plus 2x iota. Again, iota square is -1, so this becomes plus 2y here. -1 equals 0. अब real parts को इकट्ठे लिखें. Real parts आपके पास कौन से आ रहे हैं जिनमें भी iota नहीं आ रहा? So we have x square minus y square plus 2y minus 1. This is the real part. What about the imaginary part? We've got 2xy plus 2x. ये आपके पास imaginary parts आ गए. And all of that is equal to 0. Okay? Now, whenever we've got an equation in complex numbers, whenever we've got equation in complex numbers, all we have to do is left side पे जो real part है, वो right side के real part से equate कर दें. अब right side पे तो 0 ही आ रहा है आपके पास, you can say that's just 0 plus 0 iota. Left side पे जो imaginary part है, उसको right side पे imaginary part के equate कर दें. You get two equations from that. So you have x square minus y square plus 2y minus 1 equals 0. That's one equation that you get. And then similarly, you can get another equation that is going to be 2xy plus 2x equals 0. This is another equation that we get from this. अब आप क्या करेंगे, इनको simultaneously solve करेंगे और x और y की values निकाल लेंगे. ठीक है. Okay, now let's solve them simultaneously. हम क्या कर सकते हैं? Second equation is relatively simpler. Let's use that. Second equation से हम एक तो simplify कर लें. We have xy plus x equals 0 from this. And then we take x common. And that gives us y plus 1 equals 0. And we get either x equals 0 from this or y plus 1 equals 0.
and y equals -1. आपके पास x की वैल्यू 0 आ गई, एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, y की वैल्यू -1 है। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, x और y की दूसरी वैल्यूज फिगर आउट करनी है। ठीक है, सो x = 0 को कौन सी वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड करिए y की, हम कैसे पता चलेगी, we will have to input it here in the other equation. Let's do that. तो अब दूसरी इक्वेशन में जाकर क्या करेंगे, हमारे पास एक x की वैल्यू तो ये आ गई है, एक y की वैल्यू ये आ गई है। Let's input them here in the other equation. एक दफा हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इसमें 0 इनपुट कर दें। Let's see what happens when we do that. x = 0 इनपुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 0² - y² plus 2y - 1 = 0. And we have a quadratic equation from that. So that's basically y² - 2y plus 1 = 0. And if you think about this, this is basically a perfect square, right? This is a² - 2ab plus b². इसको आप लिख सकते हो। अब मिड टर्म अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता चल रहा, अब मिड टर्म ब्रेक कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, eventually you're going to get y - 1 whole square, and that gives you y = 1. x = 0 पे आपके पास क्या हो गया, x = 0 पे आपके पास y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अच्छा, let's input the other value now. दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी वहां पे, you are getting y = -1. Let's input that now. y = -1 इनपुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, we get x² - -1² plus 2 into -1. Okay, it's getting a bit cluttered. Just take it a bit on the right side. Okay, x² - -1 whole square plus 2 into -1, -1 = 0. What do we get from this? We have x² - 1 minus 2 minus 1 = 0. And that gives us x² = 4. Now, when we take square root of this, remember, whenever we take square root, we always have to put plus minus there. तो इसका हम square root लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका square root लेके हमें मिलेगा x = +-2. But now, remember, एक वहां पे statement लिखी हुई थी कहीं पे, उसने कहा था real part of w has to be less than or equal to 0. या तो वो 0 हो सकता है या negative हो सकता है. Real part of w, what is that? That's basically x here. Real part of w x है ना, उसने ये कहा कि x is basically less than or equal to 0. इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लेंगे, x की पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे, आप कहेंगे x is supposed to be -2 here. And this is the other set of values that we're getting. X = -2 and y = -1. Now, what are the possible values of w then? W क्या हो सकता है? First, x = 0 और y = 1 से हमें क्या मिल गया? 0 plus x0, right? So 0 plus 1 iota. That's basically just w = iota. That's 1. Complex number that we're getting from the second possibility, we're getting -2, that's the real part, -1 into iota, that's -2 minus iota. These are the two possible values of w that we have from this. W = iota or w = -2 minus iota. All right. So this was this complex numbers question. Inshallah, Abdullah, I really hope that you do get that A*, inshallah. I'm glad to know that those videos were helpful. Thank you. Okay, let's move on to the next one. This is question number 7 now. Okay, so we have to sketch this graph. So, अच्छा ये वाले question ना, I would really recommend that ये वाला part ना आप बिल्कुल end के लिए छोड़ें. In your exam, graph पे time लग जाता है, ऐसे ही 2 marks का होता है iteration वाला. It's not worth spending so much time in the middle of the exam. End पे जाके करें इसको. But let's have a look at this right now. By sketching a suitable pair of graphs, show that the equation 4 minus x square equals secant half x has exactly one root in the interval 0 to pi. Okay? अच्छा. अब आपके पास दो functions हैं. एक आपके पास quadratic function है left side के ऊपर. This is minus x square. तो ये क्या shape होगी? Remember, it's going to be an n-shaped graph.
This is secant half x. Secant half x. Okay. 0 से लेकर पाई तक आपको इंटरवल बनाना. Let me draw a grid here. वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला. जी इंशाल्लाह आप लोग सब अच्छा करके आएंगे. Don't worry about it. Okay. All right. So we have the y-axis here, and we've got the x-axis here. अच्छा, इसको थोड़ा सा extend कर लेते हैं actually. Just give me a second. No. ओके, हमें सिर्फ 0 से पाई तक चाहिए, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव पार्ट चाहिए वहां पे. 0 to pi. Okay, so we need a quadratic graph. पहले तो उसको देख लें. That's simpler. 4 minus x square. We know it's going to be an n-shaped graph, right? लेकिन इसके x intercepts क्या है यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं? अगर इसको equal to 0 हम इनपुट करें, x square 4 minus x square equals 0. What do we get from that? We get x square equals 4, x equals plus minus 2. So basically ये ग्राफ एक तो +2 पे x एक्सिस से कट करता है, एक -2 पे x एक्सिस से कट करता है. That's one thing that we have. लेकिन यहाँ पे हमारे पास पाई के टर्म्स में आ रहा है, तो हम सोचते हैं थोड़ा सा इसके बारे में. इसकी मैक्सिमम वैल्यू किधर होगी? मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी बिल्कुल मिडिल में. That is going to be on 0. +2 और -2 के बिल्कुल दरम्यान में, यानी 0 के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. So basically ग्राफ किस तरह से आ रहा होगा? आप 0 पे वैल्यू देख लें, x की वैल्यू 0 इनपुट करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है हमारे पास? 4 आती है. Let's write 4 here somewhere. 4 पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक ग्राफ की. अब ये नीचे आएगा, +2 पे जाके इसने इंटरसेक्ट करना है x एक्सिस को. pi/2 क्या होता है? 3.14/2. दैट्स लाइक 1.6 के आसपास. तो बेसिकली इसके राइट साइड पे यहाँ पे कहीं जाके इसने कट करना है x एक्सिस को. So you can draw a curve like this. This is the quadratic curve. ये आपके पास क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे एन शेप थी ना, तो ये हमारे सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, इतना वाला पार्ट, दिस पार्ट, मैक्सिमम पॉइंट से लेकर वहां तक. So this point is basically 2 here. So that's the quadratic part. Now let's think about secant half x. Now there are two ways of thinking about this. या तो आप transformations का सोच लें. If you're good at that, that's pretty quick. But a lot of people find that very confusing. उसका आसान तरीका क्या होता है? Just take some points. लेकिन आपको एक जनरल शेप याद होनी चाहिए. Remember cos का ग्राफ कैसा होता था? आपको जनरल शेप याद होनी चाहिए. फिर पॉइंट्स के लिए आप यूज कर लें कैलकुलेटर. This is how the graph of cos looks like. Secant में जो ग्राफ होता है ना, वो मैं यहाँ पे इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ. जहां पे cos 0 है वहां पे वो इस तरह से जाता था, ये इस तरह से कर्व होती थी ऊपर, और इस साइड के ऊपर इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. इस तरह की कर्व तकरीबन होती है. दिस आर द ग्राफ ऑफ secant looks like. It's the reciprocal of cos. तो शेप आपकी तकरीबन ऐसी होनी चाहिए. हम क्या करेंगे? कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है. पॉइंट्स आप कैसे लेंगे? आपके पास क्या है यहाँ पे? secant half x. Okay, you can write that here. y equals secant half x. 0 से लेकर पाई तक चाहिए. एक वैल्यू 0 पे देख लें. अब secant तो डायरेक्टली कैलकुलेटर में नहीं इनपुट कर सकते ना, तो हमें क्या इनपुट करना पड़ेगा? हमें इनपुट करना पड़ेगा 1/cos half x. ये जाके इनपुट कर देंगे कैलकुलेटर में. 0 इनपुट कर दें x की जगह पे, you get 1 divided by cos of 0. cos of 0 क्या होता है? 1 होता है. तो 1/1, this will be 1. तो आपके पास x की वैल्यू जब 0 है, y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. That's one point that you've got. यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा होगा. Remember the shape? Remember the shape? अभी देखिए हाफ x से क्या होता है? हाफ x से और मैं किया था, ग्राफ स्ट्रेच हो रहा है हॉरिजॉन्टली. If you remember your transformations,
स्ट्रेच हो रहा है हॉरिजॉन्टली और उसका स्ट्रेच फैक्टर क्या है? स्ट्रेच फैक्टर इज बेसिकली 2, तो वो एक्सपैंड कर रहा है आपका ग्राफ एक्चुअली, राइट? एग्जाम आपका एक्सपैंड कर रहा है ग्राफ। तो बेसिकली अगर आप इसको देखें, पाई के ऊपर वैल्यू देख लेते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे देख लें, पाई वैल्यू डालते हैं, पाई पे क्या होता है, जब इसमें पाई इनपुट करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है डिनोमिनेटर में, पाई ओवर 2, कॉस ऑफ पाई ओवर 2 0 होता है। तो पाई पाई के ऊपर आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा, और एक उनसे इन्फिनिटी, पाई के ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ होएगा वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, यहाँ पे एसिम्प्टोट बन जाएगा आपका एक। And that's basically enough information, but just for clarity, you can take another point. Pi over 2 दरम्यान में एक और पॉइंट ले लें, pi over 2 पे देख लें, pi over 2 इनपुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 over cos pi over 4, 1 divided by cos pi. You have to have your calculator mode in radians, keep that in mind. 1 divided by cos of pi divided by 4. And that gives me square root of 2. Square root of 2 is basically 1.41. तो basically आपको पता चल गया, आपको अंदाजा हो गया ग्राफ किस तरह का जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट होएगा 1 से, पाई ओवर 2 पे जाके थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और फिर वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। सो ग्राफ इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। ये आपका ग्राफ होएगा इस तरह का। ये आपने बस स्केच कर देना, पॉइंट शो करने जरूरी नहीं है, ये आपके पास ग्राफ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसने क्या कहा था? शो दैट इट हैज एग्जैक्टली 1 रूट। अभी आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इट डाउन। आप क्या लिखोगे? आप कहोगे this is one point of intersection, so आप यहाँ पे लिख देंगे, let's say there is only one point of intersection, only one point of intersection। सिर्फ ग्राफ बना के नहीं आ जाना, that will only get you 1 mark। अगर आपका सही भी होगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे? there's only one point of intersection, that implies that there is only one root। ये आपको स्टेटमेंट इस तरह से अपने वर्ड्स में कुछ भी आप लिख देंगे टू क्लैरिफाई कि क्यों आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक रूट है। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट यू डू इन दिस केस। इसको लेबल कर लें, दैट्स बेटर। दिस इज बेसिकली secant half x and this is 4 minus x squared. Okay, let's move on. Now in the second part it says verify by calculation that this root lies between 1 and 2. Now remember, इस वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले यू नीड दिस फॉर्म f of x equals 0। डायरेक्टली वैल्यूज इनपुट नहीं करनी है, एक साइड पे आपने 0 लेकर आना है पहले। ओके, लेट्स डू दैट। 4 minus x square equals secant half x। सबसे पहले हर चीज को आपने एक साइड पे ले आना है, राइट पे ले जाए, लेफ्ट पे ले जाए, डजंट मैटर, लेकिन एक साइड पे लेके जाना है, दूसरी साइड पे 0 होना चाहिए। ओके, let's do that। I'm going to take everything to the left side। 4 minus x square minus secant half x। secant half x की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर में मेरे पास secant नहीं होता, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 over cos half x equals 0। हर चीज में एक साइड पे ले गया। Now I can say this thing is f of x। अब इसके अंदर एक दफा मैंने 1 इनपुट कर देना, एक दफा 2 इनपुट कर देना, ठीक है। लेट्स डू दैट। अभी कैलकुलेशन आपको पूरी शो करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में डालेंगे, वैल्यूज निकाल के बस लिख देंगे f of 1। देख लें क्या आता है। लेट मी डू दैट। 4 minus 1 divided by cos of half x। when I input x equals 1 there, I'm going to be getting, yeah, so this is radians, that's okay, half, that's 0.5। Okay, so this is giving me 1.86। 1 के ऊपर मुझे 1.86 मिल रहा है। 2 इनपुट कर देते हैं, मैंने जो पहले इनपुट किया था उसी में एडिट कर दूंगा। 2 over 2 is going to become 1, तो डिनोमिनेटर में बस cos के अंदर 1 आ गया। So there's something wrong that I'm doing here। Yeah, no, that's okay। और x square यहाँ पे जो था, इसके में भी आपने x की वैल्यू 2 चेंज करनी है, keep that in mind। That becomes 4 minus 4 minus 1 divided by cos of 1, and that gives me minus 1.85। This is what I'm getting। एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, but that's not enough। You can't leave it like this। इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, 1 मार्क मिलेगा सिर्फ। आप क्या लिखोगे? अब
आप कहोगे साइन इज चेंजिंग. अगेन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में आपने बस क्या लिखना है, साइन चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई अ रूट लाइज बिटवीन 1 and 2. So one way to do this is you say f of 1 and f of 2 have different signs. Sign change हो रहा है. That means root lies between 1 and 2. Okay, so that's what we have to do here. Okay, let's move on. Now it says use this iterative formula. X raised to the power n plus 1 equals square root of 4 minus secant half x. ये आपने formula use करना है to find, to determine the root connected to two decimal places. Give the result of each iteration to 4 decimal places. यहाँ पे जो accuracy की instructions है, you have to make sure that you follow them to the dot. ये आपने exactly इस तरह से follow करनी है. That's very important. Okay. स्टार्टिंग पॉइंट का यूज करेंगे. बिटवीन 1 and 2 हमने प्रूफ किया पहले. तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5, उसका मिड पॉइंट x1 equals 1.5. Okay, now let's just input this in our calculator. x2 में क्या होएगा, it's going to be square root of 4 minus, कैलकुलेटर में सीकेंट तो नहीं डाल सकते हम, क्या करेंगे, 1 over cos of half into 1.5. ये हम कैलकुलेटर में इस तरह से डालेंगे, लेकिन इस तरह नहीं डालेंगे. हम कैलकुलेटर में क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे, हम पहले लिखेंगे 1.5, then we'll press the equal sign. ये फ्री के मार्क्स होते हैं. you have to make sure that you know this process. 1.5 इनपुट किया, equal to का साइन प्रेस किया, and then you write down this formula. स्क्वायर रूट का साइन डाल दें और उसके अंदर फिर आपने सब कुछ करना है. स्क्वायर रूट के अंदर you'll say 4 minus 1 over cos of 1 over 2 into answer, or you can say cos of answer over 2. ये आपने जाके कैलकुलेटर के अंदर इनपुट कर देना है और उसको इक्वल टू का साइन प्रेस करते रहना. ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस. लेट मी डू इट इन माय कैलकुलेटर. 1.5 पहले इनपुट कर दिया मैंने. अगेन यू हैव टू मेक श्योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन मोड. पेपर 3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स के अलावा आपने कहीं पे डिग्रीज नहीं यूज करने. ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स के अलावा कहीं पे डिग्रीज नहीं यूज करने, अदरवाइज आपके आंसर सारे गलत आ रहे हैं. ओके, अच्छा, लेट्स डू दिस. 1.5 मैंने इनपुट कर दिया. लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला. स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus 1 over cos of answer divided by 2 bracket closed. Okay, now you have to write down your iteration results to 4 decimal places. Okay, the first value that I'm getting is 1.6227. Okay, now I press the equal button again. That gives me 1.5961 to 4 decimal places. x4, that's 1.602. I'm getting on my calculator 2354. इसको मैं 1.6023 नहीं लिखूंगा, मुझे लास्ट डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा. लास्ट डेसिमल प्लेस में क्या लिखूंगा मैं, 3 की जगह पे I have to write 4 there, round up हो जाएगा. Okay, let's do one more. x5, यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, 1.6009. So you see, it's already getting stable. यहाँ पे भी 2 decimal places तक 1.60 आ रहा था, ये भी 1.60 आ रहा है, ये भी 1.60 आ रहा है. So 3 iterations consecutive जो आपकी stable हो जाए 2 decimal places तक, जिसका आपको आंसर चाहिए, you can actually just stop at that point. अब यहाँ पे रुक सकते हो, but if you want to be very sure about it, let's just do one more. If you want, जरूरी नहीं है, आप कर सकते हैं, करना चाहें 1.6012, and now you're pretty sure. आप ये देखें सारी iterations, यहाँ ये चारों iterations कहाँ पे राउंड ऑफ हो रही है, 1.60 के ऊपर. अब क्या लिख दोगे, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा. इसने कहा है
रूट फाइंड करना तो आप लिखोगे x equals 1.60 to 2 decimal places. So your final result is going to be 1.60. That's your final answer. Okay. All right. Let's move on. Question number 8. ये आपका iteration वाला question हो गया. Question number 8. Okay. We have to find the quotient and remainder when 8x cubed plus 8x square, 4x square plus 2x plus 7 is divided by this thing. Simple division करनी है. It's not a linear divisor, तो आपको क्या करना पड़ेगा? Long division use करनी पड़ेगी. इसमें आप कुछ और नहीं कर सकते, synthetic division वगैरह नहीं कर सकते. Coefficients compare करने वाला method अगर आपको आता है वो कर सकते हैं, but long division works every time. So I'll just use that. 8x cube plus 4x square plus 2x plus 7. इसको आपने divide करना है 4x square plus 1 के साथ. Okay, so we think about the first term here and the first term here. 4x square को किससे multiply करेंगे तो 8x cube आएगा. We'll have 2x here. 2x से multiply किया. 4x square plus 1 into 2x. What does that give us? That gives us 8x cube. And then 2x, remember 2x आपका इसके नीचे लिखेंगे हम. दरम्यान में खाली जगह या तो स्पेस छोड़ दें क्योंकि x square वाली टर्म मिसिंग है, या फिर आप लिख दें 0x square. Let's change the signs now. ये minus हो गया, minus हो गया, minus हो गया. This gets cancelled. We have 4x square. Again, the x term is missing there. We can have 0x there if you want, plus 7. Now, what's the next one? 4x square को किससे multiply करेंगे तो 4x square आएगा. 1 के साथ, we have 2x plus 1 here. And that gives us 4x square plus 1. दरम्यान में फिर हमारी खाली जगह. We do the cancellation. Subtract कर लिया. What are we left with? We're left with 6 there. इसका क्या मतलब हुआ? आपको उसने क्या कहा था? Quotient और remainder निकालना. This is your quotient. And this is your remainder. You can write them here. The quotient turns out to be 2x plus 1. And the remainder is 6. That's the remainder. ठीक है, ये आपको figure out करना है. All right, so you've got the quotient and the remainder here. Let's move on. Now it says, hence find the exact value of this integral. आपने integrate करना है. And it says, hence find the exact value. अच्छा, hence का मतलब पिछले part को use करना है. What have we done in the previous part? You found the remainder and the quotient. Now, how is that even relevant to this? देखिए, इसको डायरेक्टली करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है. फ्रैक्शन को हम किस तरह से इंटीग्रेट करते होते हैं, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं. लॉग वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं आ सकता. यहाँ पे tan इनवर्स नहीं हो सकता बिकॉज tan इनवर्स में आपको न्यूमरेटर में कांस्टेंट चाहिए होता है, वो भी नहीं है आपके पास. पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में तो है ही आपके फैक्टर्स नहीं, कोई सिर्फ एक ही टर्म है. So none of those rules is working here. But you see, it's an improper fraction. Now, if you remember your polynomials well, polynomials के अंदर आपने एक relationship पढ़ा हुआ है. That's a relationship between dividend, divisor, quotient, and remainder. Let me just write that down here. And that looks like this. Dividend over the divisor, that equals quotient plus the remainder divided by the divisor. ये आपको पोलिनोमियल से पता है, ये आपको याद होना चाहिए ये रिलेशनशिप. इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, एक और भी फॉर्म होती है इसको लिखने की, बट दिस इज व्हाट वी गोइंग टू बी यूजिंग हियर. ये आपके पास डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर के अंदर, कोशेंट और रिमाइंडर के अंदर रिलेशनशिप होता है. So what we can actually do here is, if you think about this, यहाँ पे हमने ऊपर क्या किया था? हमने ये डिवीजन की थी. इस चीज को हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ रही है. इसको हमने डिवाइड किया था इसके साथ 4x square plus 1 के साथ, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं. तो बेसिकली वही डिवीजन जो हमने ऊपर की है वही इसने फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है. So what we can do is, we can actually write 8x cube plus 4x square
plus 2x plus 7 divided by 4x square plus 1. इस इंटीग्रल को हम एक्चुअली लिख सकते हैं इस तरह से डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर ओवर डिवाइजर में. इस डिवीजन में हमारा कोशेंट ऊपर क्या आ रहा था? कोशेंट वाज 2x plus 1. Let's write that here. 2x plus 1 plus remainder over divisor. The remainder was 6. That's 6 over the divisor. The divisor was 4x square plus 1. So basically उस फ्रैक्शन को जिसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना हमें नहीं पता, हमने क्या कर लिया, हमने इसको ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में इस तरह से यूजिंग दिस रिलेशनशिप. पिछले पार्ट में हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर लिए थे, हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया. नाउ वी कैन जस्ट इंटीग्रेट दिस थिंग. इसको इंटीग्रेट तो हम कर सकते हैं. 2x plus 1 को अलग से इंटीग्रेट कर लें. लेट्स एक्चुअली ब्रेक दिस डाउन फर्स्ट इफ दैट मेक्स इट सिंपलर. 2x plus 1 को अलग से इंटीग्रेट कर लें और 6 over 4x square plus 1 को अलग से इंटीग्रेट कर लें. अच्छा, what's the integral of 2x plus 1? 2x का integral is just 2x square over 2. x की पावर में 1 ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया उसे इंक्रीज पावर के साथ. What's the integral of 1? 1 का integral is just x. That's the integration of this part. अच्छा, अब सेकेंड पार्ट को कैसे इंटीग्रेट करें, ये कौन सी फॉर्म बन रही है? If you think about this, this is actually the tan inverse form. ये tan inverse यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. Now remember what it used to look like. आपके पास एक तो फॉर्मूला शीट में फॉर्म दी होती है, दैट लुक्स लाइक दिस. अगर आपके पास इस तरह से हो कुछ 1 over x square plus a square फॉर्म के अंदर आपके पास कुछ हो, तो इसका जो इंटीग्रल होता है दैट इज गिवन बाय 1 over a into tan inverse of x over a. या तो आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. तो आपको उसको पहले 1 बनाना पड़ेगा अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, अगर आप ये यूज करना है, आप 4 कॉमन लोगे डिनोमिनेटर से, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे एंड देन यू कैन यूज दैट. ठीक है. Another possibility is there's another form that you can actually that you actually have. वो डिफरेंशिएशन वाली जो फॉर्म उसमें लिखी होती है फॉर्मूला शीट में, उससे आती है. अगर आप वो यूज कर लेंगे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा. Let me just tell you about that as well. If you have a over 1 plus ax whole squared, इसका जो इंटीग्रल होता है that is tan inverse of ax. अगर आपके पास ये फॉर्म हो इस तरह से, इसका इंटीग्रल क्या होता है? It's tan inverse of ax. Now, if you want, you can remember this. You can memorize this. आप ये यूज कर सकते हैं. There's a logic for this, of course, but I'm not going to go into that right now. ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं. अगर आपके पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो फिर तो पहली फॉर्म यूज करें. अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, जो साथ वाला दूसरा नंबर है वो 1 है, उसमें आपके पास ये दूसरी फॉर्म जो है वो क्विकर होगी. लेकिन आप दोनों यूज कर सकते हैं हर केस के अंदर. सो इट्स योर चॉइस बेसिकली. तो आप ये फर्स्ट फॉर्मूला शीट वाली फॉर्म भी हर जगह यूज कर सकते हैं. दैट्स आल्सो फाइन. You can try it like that way. I'm going to do the second one because that's quicker here. What do we want in this case? Denominator में मुझे क्या चाहिए? 1 plus sum squared. So what I can do is I can actually write it like this. I can say this is in the denominator. 1 में पहले लिख रहा हूँ. 4x squared can be written as 2x का whole square. Okay, मैंने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया. अब जब ये 2x का whole square लिख दिया, ये जो नंबर है यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर में चाहिए. तो बेसिकली ये अंदर वाले पार्ट के डेरिवेटिव है जो मुझे ऊपर चाहिए. मुझे ऊपर 2 चाहिए. राइट नाउ आई हैव गॉट 6. मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए. तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन राइट 2 हियर इन द न्यूमरेटर और 3 में बाहर लिख देता हूँ. ठीक है, मैंने 6 को ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स के अंदर. 3 into 2. And now this is the form, this is exactly the form that we have there. इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ. This is going to be अच्छा x स्क्वायर प्लस x, वो तो वहां से आ गया, प्लस 3 into इस चीज का इंटीग्रल क्या हो जाएगा?
इस चीज का इंटीग्रल हमारे पास ये राइट साइड पे लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ ax, basically this number, tan inverse of 2x, 3 into tan inverse of 2x. तो अगर दूसरा नंबर 1 हो तो ये वाली फॉर्म जो है आपको एक स्टेप में आंसर दे देती है, लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स अगर आप ये वाली यूज करना चाहते हैं. इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, द फर्स्ट वन, दैट्स आल्सो फाइन, आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हो, that's also fine. So there are multiple ways of doing this. You can just stick to what you're more comfortable with, and that's going to be okay. इंटीग्रेट कर लिया हमने, अब क्या करना है, इसने लिमिट्स दी हुई थी 0 से लेकर 1/2. लेट्स इनपुट दोस लिमिट्स हियर, 0 to 1/2. अच्छा, let's input 1/2 first. We have 1/2 whole squared plus 1/2 plus 3 tan inverse of 2 into 1/2. That's basically 1. ये आपने 1/2 input कर दी. Subtract from that the case when you input 0. 0 input करेंगे तो 0 square is 0. 0 is also, that's also 0, plus 3 into tan inverse of 0. ये आप इनपुट करके दिखाएंगे. ये लिमिट्स इनपुट करके दिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके मार्क्स होते हैं. आपने ये वैल्यूज इनपुट करके दिखानी है सारी, ठीक है. अच्छा, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस नाउ? वी हैव 1/4 प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1. अगेन ये आपने कैलकुलेटर से बेशक आप इवैल्यूएट कर लें, दैट्स गोइंग टू बी ओके, लेकिन आपको क्योंकि उसने एग्जैक्ट वैल्यू कहा हुआ है, आप कैलकुलेटर से पहले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे इनपुट करोगे. tan इनवर्स ऑफ 1 की एग्जैक्ट वैल्यू रेडियंस के अंदर आप पहले यहाँ पे इनपुट करोगे. tan इनवर्स ऑफ 1 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? इट्स pi/4 इन रेडियंस. इवन इफ यू आर डूइंग दिस ऑन अ कैलकुलेटर, ये वैल्यू दिखाना आपने जरूरी है, ठीक है. ये वाली टर्म्स सारी 0 हो रही हैं, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, ये बेसिकली सारा 0 बन गया, ठीक है. tan इनवर्स ऑफ 0 बेसिकली 0 ही होगा. Now you can simplify this. 1/4 plus 1/2, that's going to be 3/4 plus 3 pi/4. That's what you wanted here. That's the exact value of this integral. ये आपको करना था यहाँ पे, ठीक है. Okay, so that was question number 8. Let's move on to the next one. We've got these variables x and y. They satisfy this differential equation. X plus 1 into 3x plus 1 into dy over dx equals y. We've got this differential equation. And we're given that y equals 1 and x equals 1. Solve the differential equation and find the exact value of y when x equals 3, giving an answer in a simplified form. अच्छा, solve कैसे करते हैं differential equations को? सबसे पहला काम क्या करना होता है? Variables को separate करना, ठीक है. That's the first thing we have to do. dy left side पे numerator में है तो left side पे y terms, dx right side पे चला जाएगा numerator में तो right side पे सारी x वाली terms. Okay, let's do that. Y को left पे ले आए, it becomes 1/y. X वाली terms को right पे ले जाए, that's going to become 1/x plus 1 into 3x plus 1 dx. Okay, now the left side is pretty simple to integrate. 1/y का इंटीग्रेट क्या होता है? Let's integrate both sides. दोनों का इंटीग्रेट ले लिया, लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, बस आ गया ln y. That's pretty straightforward. Right side पे it's a fraction. Now it's pretty obvious here, आपको नजर ही आ रहा है, देख के क्या करना पड़ेगा यहाँ पे. You'll have to do partial fractions, right? Because उसमें directly rules नहीं लग रहे, आपके पास log rule directly नहीं लग रहा, right? Tan inverse वाला rule नहीं लग रहा. So the third option that you've got is partial fractions after that. So we have to find partial fractions for this. ठीक है, let me see how much space we've got here. Okay, ठीक है. Partial fractions कर लेते हैं. Before we actually go further with this, now the partial fractions कर लें. So मैं यहीं पर रोक लेता हूँ, in fact. Okay. 1/x plus 1 into 3x plus 1. These are non-repeated linear factors और ये proper fraction है. So क्या form बन जाएगी? a/x plus 1 plus b over
प्लस बी ओवर 3x प्लस 1। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो ये डिनोमिनेटर है उसको राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें। We get 1 identical to a into 3x plus 1 plus b into x plus 1. Now let's input some values of x that will make these brackets 0. x plus 1 को कैसे 0 करेंगे, x equals -1 input कर दें। x equals -1 input करते हैं, we get 1 equals a into -3 plus 1, दूसरी टर्म तो 0 हो गई, and that gives us 2a equals 1 and a equals 1 over 2. Okay, a की वैल्यू आ गई हमारे पास। Let's find the value of b now. Sorry, ये -2a था। This is -2a, so that becomes -1 over 2. Okay, अच्छा अब क्या करें, 3x plus 1 इस ब्रैकेट को कैसे 0 कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या इनपुट करेंगे, -1 over 3. You can just input this equal to 0. 3x plus 1 equals 0. X equals -1 over 3. -1 over 3 is another value that we can input here now. X equals -1 over 3. ये input कर देते हैं. Although you could actually just input x equals 0 now as well. कोई भी x की वैल्यू डाल सकते हैं, x equals 0 डाल दें और साथ आपके पास a की वैल्यू तो आ गई है, वो इनपुट कर दें, फिर भी आपके पास b आ जाएगा. So there are multiple ways of doing this. But I'm inputting -1 over 3 here. Let's see what I get from this. On the left side, I still have 1. On the right side, first bracket 0 हो जाएगी. -1 over 3 input करेंगे तो that becomes, in the second bracket, we have -1 over 3 plus 1. And that gives us 1 equals 2 over 3b. And b turns out to be 3 over 2. Yeah, plus b की वैल्यू. Okay, I'm sorry I got disconnected. Can you guys see my screen again? Yeah, I think that's working. Let me just repeat that. Yeah. Okay, so we basically input. So the second value of x that we can input here, that is x equals -1 over 3. That's going to make this bracket 0. -1 over 3 input करते तो हमारे पास क्या आता है? We get 1 equals 0 plus b into -1 over 3 plus 1. And that gives us 1 equals 2 over 3 times b. And the value of b turns out to be 3 over 2 from that. Okay, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई यहाँ से.
Okay, so we have the value of a and the value of b now. अब हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर हमने ये fraction लिखी हुई थी, we can break it down into two parts. हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं नीचे. So we have 1 over y dx, ये लेफ्ट साइड पे आ रहा था. राइट साइड पे हमारे पास अब क्या हो गया, 1 over x plus 1 और 1 over 3x plus 1 के बजाय we've got, यहीं पे लिख लेते हैं, it's going to become minus 1 over 2, यहाँ पे लिख लें, minus 1 over 2 into x plus 1 plus 3 over 2 3 over 2 into 3x plus 1. That's what we get from this. ठीक है, ये हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लेते हैं. So we have minus 1 over 2. इसको बेसिक एक्सपैंड करके लिख लें if you want. So you get 1 over 2x plus 2, right? And we have plus 3 over 6x plus 2. ठीक है, अच्छा राइट साइड पे हमारे पास dx था, लेफ्ट साइड पे we should have dy there. Okay, so this is what we have. हमने इसको ब्रेक कर लिया. अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे. ठीक है, let's integrate both sides. Let's integrate the right side and the left side. On the left side, 1 over y का integrate क्या होगा, ln y. Right, that's pretty straightforward. And then what about these fractions? इनको अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं. क्या करेंगे, ये दोनों log फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. किस तरह से? What's the derivative of 2x plus 2? 2x plus 2 का डेरिवेटिव 2 है. हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए न्यूमरेटर के अंदर. हम क्या करते हैं, तो माइनस साइन को बाहर लिख देते हैं. ठीक है, बिकॉज माइनस तो नहीं चाहिए हमें सिर्फ 2 चाहिए. और ऊपर हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे. हम -1 को बाहर ले जाते हैं, ऊपर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं. बट वी कांट जस्ट पुट 2 देयर आउट ऑफ द ब्लू. वी हैव टू बैलेंस दैट. बाहर उसकी जगह 2 से डिवाइड कर दो. सो अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया. उसका फायदा क्या हुआ, लॉग फॉर्म आपकी बन गई. दैट्स द फर्स्ट फ्रैक्शन. व्हाट अबाउट द सेकंड फ्रैक्शन? 6x plus 2 का डेरिवेटिव क्या है? 6x plus 2 का डेरिवेटिव is 6. We want 6 in the numerator. We want 6 in the numerator. अभी हमारे पास क्या है, 3 है. एक तरीका ये हो सकता है, आप 3 को उठा के बाहर लिख दें. अगर आप ज्यादा सोचना नहीं चाहते, इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या है, जो नंबर लिखा है उसको बाहर लिख दें, अंदर आप 6 डाल दें और बाहर 6 से डिवाइड कर दें. या फिर आप ये भी कर सकते थे कि अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बाहर 2 से डिवाइड कर देते. इट्स द सेम थिंग, बट दैट्स व्हाट यू हैव. ये आपने दोनों को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, नाउ वी कैन इंटीग्रेट दैट. अब इसको इंटीग्रेट कर लें. वी हैव ln y इक्वल्स -1 over 2. इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी ln of 2x plus 2 plus 3 over 6, which is just the same thing as 1 over 2 into ln of 6x plus 2. ये आपके पास इंटीग्रल आ गया. बट देन when you integrate, आपने क्या करना होता है, एंड पे प्लस सी लगाना होता है. You can put that either on the left side or on the right side, doesn't matter. राइट साइड में लेट्स से मैं प्लस सी लगा देता हूँ. ठीक है, so that's my solution for this. That's the general solution. अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. How do you find the value of c now? You've got a point given. उसने कहा है y equals 1 when x equals 1. वो इनपुट कर देते हैं. Let's input x equals 1 and y equals 1. When we do that, we have ln 1 equals -1 over 2 ln of 2 plus 2 plus 1 over 2 into ln of 6 plus 2 plus c. What does that give us? Left side पे 0 आ गया. Right side पे we have -1 over 2 ln 4 plus 1 over 2 ln 8 plus c. We can actually simplify this if we want. It's not necessary, but we could do it. अब आगे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी. You have -1 over 2. इसको हम लिख सकते हैं ln 2 का स्क्वायर, and this can be written as ln 2 का क्यूब, right? And then those 2 and 3 can come out. 2 आके यहाँ बाहर आ जाएगा.
becomes minus ln2, right? 2 जब यहाँ पे बाहर आएगा डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो गया, माइनस ln2 बच गया, ये 3 बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2 times ln2 plus c equals 0. And now we get the value of c from this. इसको अगर आप simplify कर लें, you basically get c equals minus 1/2. Yeah, so this is going to be 1/2. It goes to the other side, becomes minus 1/2. इसको आप simplify कर लेंगे, अब पास आ जाएगा minus 1/2 ln2. This is the value of c now. c आ गया हमारे पास. अब क्या करें? अब हमारे पास सोल्यूशन तो आ गया, इसकी जगह अब यहाँ पे c की जगह वो डाल देंगे जो हमारे पास नीचे आया. But then what do we want? उसने हमें क्या कहा था? उसने कहा था solve the differential equation. Okay, solve कर लिया. अब इसको उसकी फाइनल सोल्यूशन आप लिख दें पहले कि सॉल्व करने के भी मार्क्स है ना वहाँ पे. तो फाइनल सोल्यूशन आपको क्या आ गया? ln y equals minus 1/2 into ln of 2x plus 2 plus 1/2 into ln of 6x plus 2 minus 1/2 into ln of 2. ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है. लेकिन जब भी आप इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सोल्यूशन देते हैं, इट्स बेटर टू राइट इट एज अ सिंगल लॉग टर्म. ठीक है, कभी कभी उसने इसका मार्क रखा होता है, कभी नहीं रखा होता है. आपको तो नहीं पता कि आपके वाले पेपर में होगा उसका मार्क या नहीं होगा. इट्स बेटर टू राइट इट एज अ सिंगल लॉग टर्म rather than writing multiple log terms there. सिंगल लॉग टर्म में लिखना बेहतर होता है. उसने क्या कहा है? उसने कहा है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y चाहिए when x equals 3 और एग्जैक्ट फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म. ठीक है, हम पहले इसको क्या कर सकते हैं, यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लें. इफ वी वांट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दिस बिकम्स ln y और यहाँ पे 1/2 अगर आप कॉमन ले लें बाहर, अंदर हमारे पास क्या बचा? पॉजिटिव टर्म्स कौन सी हैं? ln of 6x plus 2 है. Then we have minus ln of 2x plus 2 and we have minus ln2. You can actually use the log rules here and that's going to become 1/2 into ln of 6x plus 2 माइनस ये हो रहा है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 2x plus 2 ये भी माइनस हो रहा है तो ये भी 2 भी आपके डिनोमिनेटर में चला जाएगा. अब इसको एज अ सिंगल लॉग टर्म इस तरह से लिख सकते हैं. एंड दैट्स एक्चुअली प्रेफर्ड. एग्जामिनर ने अक्सर इसका एक मार्क रखा होता है, कभी रखता है कभी नहीं रखता. सो इट्स बेटर टू राइट इट लाइक दिस एज अ सिंगल लॉग टर्म. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी बेटर. ऑलराइट, ओके. अच्छा, ये हमारे पास आ गया. अब उसने कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं मांगी, तो उसने नहीं कहा था y in terms of something या x in terms of something. आप उसको एज इट इज रहने दे सकते हो. अब उसने क्या कहा? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y चाहिए when x equals 3. ओके, लेट्स फिगर दैट आउट नाउ. x equals 3 इसमें इनपुट कर दें. x equals 3 इनपुट करते हैं, हमारे पास क्या आता है? ln y equals 1/2 into ln 6x plus 2. 3 इनपुट करेंगे 20 आ जाएगा, divided by denominator में we got 6 plus 2, that's 8. 8 into 2 is going to be 16. So that's what you're getting from here. Now this can be written as ln y equals ln of 5/4. अंदर cancellation होगी, right? This is 5, this is 4. और एक पावर जो है ऊपर लेकर आ सकते हैं 1/2. दोनों साइड्स पे एक सिंगल लॉग है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? y equals 5/4 raised to power 1/2. पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख सकते हैं, that's your choice, but that's your final result here. y equals square root of 5/4. That's what we wanted. ठीक है, ये आपको करना था. That was 9 marks. तो बेसिकली इसमें कुछ पार्शियल फ्रैक्शंस के मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स, 3-4 मार्क्स इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस को आएंगे. ठीक है, फिर आपको इंटीग्रेट करने के मार्क्स होंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के मार्क्स हैं. फिर आपने एंड पे जो y की वैल्यू फिगर आउट किया, you have a couple of marks for that as well. All right, let's move on. Now we've got vectors. Question number 10. The points A and B have position vectors 2i plus j plus k and this respectively. A और B के position vectors दिए हैं. The line L has vector equation दी हुई है line L की. Find a vector equation for the line through A and B. Okay, how do you find the vector equation of a line?
I generally prefer to work in the column vector form. मुझे वो आसान लगता है, so I'll just do that. Standard form क्या होती है? R equals A plus lambda times D. डायरेक्शन वेक्टर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए. पॉइंट्स तो आपके पास है दो. डायरेक्शन वेक्टर कैसे आएगा? आप AB फाइंड कर लें. AB vector, that's going to be OB minus OA. That's going to give you the direction. So मैं column vector form में लिख लेता हूँ यहाँ पे. This is going to be 2, 1, 1. And this one is 1 minus 2, 2. These are the vectors. OB minus OA करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? This is OB and this is OA. Okay, 1 minus 2, that's going to be minus 1. Minus 2 minus 1, that's minus 3. 2 minus 1 is 1. ये मेरे पास AB vector आ गया. ठीक है? AB vector आ गया. अब क्या करें? आपके पास एक पॉइंट है, कोई भी दोनों में से कोई भी पॉइंट ले लें. आप लाइन की इक्वेशन लिखना है. जैसे R equals A, let's take this point. मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ. 2, 1, 1 plus lambda. अब देखिए दूसरे में उसने म्यू यूज किया हुआ है, तो आपने बस ये ध्यान रखना है, आपने वो वाला लेटर नहीं यूज करना जिसने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर यूज किया हुआ है. उसने म्यू यूज किया हुआ है, आप लैम्डा यूज कर लें. तो इसे 2, 1, 1 plus lambda into the direction vector. डायरेक्शन क्या है? Direction is -1, -3, 1. That's the equation that we were looking for. उसने भी specific form नहीं मांगी. आपको जरूरी नहीं है आपने IJK form में लिखना है, आप इस तरह भी छोड़ सकते हैं. And that is going to be all right. ठीक है? Okay. Let's move on to the next one. It says find the acute angle. That's important. Acute angle चाहिए. Between the directions of AB and L. Okay, let's write those vectors down here. AB vector क्या था? AB vector हमारे पास आ रहा था -1, -3, 1. Direction vector of L. L का direction vector क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है. This is the direction vector of L. 1, -3, -2. Okay, direction of L. इसको इस तरह लिख लेते हैं. Direction of L, that is 1, -3, -2. 1, -3, -2. These are the two direction vectors that we have. What we want is, we want the angle between them. हमारे पास angle का क्या formula होता है? ये formula sheet में लिखा होता है cos theta equals A dot B. दो vectors जो हैं उनका dot product divided by modulus of A into modulus of B. हम ये चीजें evaluate कर लेते हैं साइड पे. Dot product evaluate कर लें. -1, -3, -1, -3 into 1. 1 and 1, -3, -2. इनका डॉट प्रोडक्ट इवैल्यूएट कर लें. ये देख लें क्या आता है. -1 plus 9, that's going to be 8. 8 minus 2, that turns out to be 6, right? डॉट प्रोडक्ट आपके पास 6 आ गया. इसकी वर्किंग शो कर लें तो वैसे बेहतर है, ताकि कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको पार्शियल मार्क्स तो मिल जाए. +9 - 2, that gives us 6. ये डॉट प्रोडक्ट आ गया. दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकाल लें. AB का मैग्नीट्यूड 1 square plus 3 square plus 1 square. That's 9 and 11. Square root of 11. जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, लेट्स से लाइन L का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, that's going to be 1 square plus 3 square plus 2 square. Square root of that, that's 9 plus 4 plus 1, that's 14. Square root of 14. ये आपके पास दोनों के मैग्नीट्यूड्स आ गए. ठीक है? Now I just need to apply the formula. Cos theta equals A dot B, which is 6 divided by square root of 11 and square root of 14. ये evaluate कर लें. Cos theta क्या आ जाता है आपके पास यहाँ पे? 6 divided by square root of 11 and 14. This is 0.4835. ये हमारे पास cos theta आ गया. Let's find theta from this. Again, यहाँ पे कोई मसला नहीं है. आप radians यूज करना चाहे radians कर सकते हैं. अच्छा, उसने कहा है डिग्रीज. यहाँ पे उसने कहा है, उसने बताया डिग्रीज, तो आपको डिग्रीज ही यूज करना है.
वरना यहाँ पे अक्सर चॉइस होती है, बट यहाँ पे उसने डिग्रीज कहा है तो यू हैव टू यूज डिग्रीज. यू कांट गिव योर आंसर इन रेडियंस. आपके मार्क्स उसका एक मार्क कट जाएगा. Cos inverse of this answer that is giving me 61.09 degrees. I can leave it like this if I want, or I can write 61.1 degrees. ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया. ठीक है. अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा होता, लेट्स से अगर आ जाता ऑब्ट्यूज एंगल, मैंने ये ए बी के बजाय मैंने बी ए वेक्टर ले लिया होता, मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता, तो मैं क्या करता, 180 में से माइनस कर देता उसको. ठीक है. And then I would get the acute angle. Okay, that's 61.1 degrees. That's the angle between the lines. Now it says show that the line through A and B does not intersect the line L. So basically, आपने सिर्फ क्या करना है, दोनों lines को आपने show कर देना है that they do not intersect. So skew lines आपने show करना है, उसका जो process आपका standard होता है वो बस apply कर देना है यहाँ पे. Let me write down the equations again. AB line की equation क्या थी? Let's write that down here. That was R equals, find की थी first part में 211 plus lambda into -1 -3 and 1. ठीक है. That was AB. We have the other line as well, line L. वो क्या थी? 1 2 -3 1 2 -3. You have to be very careful here when copying these things. यहाँ पे मेरे तो careless errors बहुत ज़्यादा होते हैं. So you have to be careful कि आप सही copy करें. ठीक है. माइनस प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी. 1 -3 -2 1 -3 -2. These are the equations that we've got. हमने प्रूव करना है that these lines do not intersect. Okay. तो आपने क्या करना होता है इसके अंदर, just follow the process that you have, the method that you have for finding points of intersection. Points of intersection find करने का जो method होता है वो आपने यहाँ पे apply कर देना है. क्या होता है, दोनों को आपने equate करना है. So essentially what you have is you've got 2 minus lambda, you have 1 minus 3 lambda, and 1 plus lambda. That's my first equation. ये वाली equation आ रही है लेफ्ट वाली. इसको मैं इक्वेट कर दूंगा किसके साथ, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा ये दूसरी इक्वेशन के साथ, which is 1 plus mu, and I have 2 minus 3 mu and -3 minus 2 mu. Now what I get from this is I get three equations. I've got equation 1 here, equation 2 here, and equation 3 here. And now I have to take any two of these. कोई भी दो उठा लें, उनको simultaneously solve करना. ठीक है. Any two, you can take any two you want. आपको थोड़ी आसान लग रही है वो ले लें. Okay, so I'm going to take 1 and 2. Equation 1 और 2 में यहाँ पे लिख लेता. I've got 2 minus lambda equals 1 plus mu. That's one equation. And the other is 1 minus 3 lambda equals 2 minus 3 times mu. What do we get from this? इनको simultaneously solve करने हैं. अब substitution कर लें, एक variable को subject बना लें. For example, I can make let's say mu the subject in the first equation. इसको mu को subject बना लेते हैं. We get 1 minus lambda. Mu equals 1 minus lambda. ये आ गया मेरे पास first equation से. Let's input that in the second one. Put mu equals 1 minus lambda. इसके अंदर जाके input कर दिया. Let's see what that gives us. That gives us 1 minus 3 lambda equals 2 minus 3 into 1 minus lambda. ठीक है. mu की जगह पे हमने वो input कर दिया, 1 minus lambda. Yeah, that's okay. 1 minus 3 lambda equals 2 minus 3 plus 3 lambda. And that gives me minus 6 lambda equals -1 and -1. That's going to be -2. Lambda equals 2 over 6, which is 1 over 3. Lambda की value मेरे पास आ गई 1 over 3. Now what I'm going to do is I'm going to input this back in the other equation. So जाके input कर देंगे. We get 1 minus 1 over 3. And that equals mu, and mu turns out to be 2 over 3. ये मेरे पास lambda और mu की values आ गई. Now what I have to do is I have to input these two values
in the third equation. अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती होती, ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती, और फिर उससे हम वो पॉइंट फाइंड कर सकते थे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता. बट लेट्स सी इफ दिस इज गोइंग टू वर्क हियर. ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू सब इनपुट कर दें इक्वेशन 3 के अंदर. लेट्स सी व्हाट दैट गिव्स अस. इक्वेशन 3 क्या थी? Equation 3 was 1 plus lambda equals minus 3 minus 2 times mu. That's this equation 3. Okay? इसके अंदर ये values input कर दें. 1 plus 1 over 3, that equals minus 3 minus 2 into 2 over 3. You get 4 over 3 equal to, what do you have on the right side? Minus 3 minus 4 divided by 3, that gives me minus 13 over 3. The third equation is not satisfied. Third equation is not satisfied. Okay, so क्या मतलब हुआ? There are no values of lambda and mu that satisfy all three equations. What does that mean? That means the lines do not intersect. The lines AB and L do not intersect. ठीक है, that's for your own understanding. ये आपको लिखना सारा इस केस के अंदर यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है. अगर आपके पास एंड में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाए, which doesn't happen in paper 3 actually, but if you have time, you can actually explain why you're saying they do not intersect. But यहाँ पे examiner basically यही मांग रहा होता है कि third equation में जब आप input करते हैं तो वो satisfy नहीं होती, and that's going to be enough in this case, right? लेकिन आप लिखते हैं छोटा सा नोट के lambda mu की value third equation को satisfy नहीं कर रही, that's why they do not intersect. Okay, so that's what you had to do in this third part here. All right, let's move on. Okay, now it looks like integration again. Yep, so we have some shaded region there. The diagram shows the curve y equals sine x into cos 2x for x between 0 and pi over 2, and its maximum point m. आपको maximum point नजर आ रहा है वहाँ पे. Find the x coordinate of m, giving your answer correct to 3 significant figures. अच्छा, m का x coordinate find करना है. m क्या है? Turning point है. Turning point कैसे find करते हैं? Derivative निकालते हैं, 0 से equate कर देते हैं. That's all you have to do here. So you have y equals sine x into cos 2x. You find the derivative of this, dy over dx. That's equal to, it's a product, right? So product we use kar lenge. Remember that, uv dash plus u dash v, या vu dash, whatever you want. U as it is, pehli term as it is, cos 2x ka derivative. The derivative of cos is minus sine, so that becomes minus sine 2x, and then the derivative of this 2x, which is 2, you do some multiply, plus the derivative of sine, which is cos, sine x ka derivative cos x aa gaya, aur fir cos 2x as it is. This is what you get. This is the derivative that you've got. Let's simplify this. We get minus 2 sine x into sine 2x plus cos x into cos 2x. And since we're looking for the turning point, we put this equal to 0. इसको 0 से equate कर दिया हमने. And now we need to solve this equation. इससे हमें x की values निकालनी है. अब इसको कैसे solve करें? Remember, जब भी आप किसी trigonometric equation को solve करना चाहते हैं, आपको सिर्फ एक type of trigonometric function चाहिए, या सिर्फ sin चाहिए, सिर्फ cos चाहिए, या सिर्फ tan चाहिए, और सिर्फ एक type of angle चाहिए. यहाँ पे तो 2x भी आ रहा है और x भी आ रहा है. तो पहले तो हम क्या करते हैं, angles को single angles में convert कर लेते हैं. ठीक है, let's apply the double angle identities here. Angles को single angles में convert कर लें. Let's see what that tells us. Minus 2 into sine x. Sin 2x क्या होता है? Formula sheet में आप देख लें. It's 2 sine x into cos x. अच्छा, plus cos x into cos 2x. Cos 2x की 3 different forms होती हैं. Now,
You can actually use any of them और बाद में आप चेंज कर लें जो भी आपको चाहिए उसके मुताबिक, या फिर आप देख लें कि अच्छा बाकी क्या आ रहा है आपके पास। देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर आ रहा है और एक कॉज आ रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास एक कॉज है, एक साइन स्क्वायर आ जाएगा साथ, तो दैट माइट बी हेल्पफुल। तो हम वो वाली साइन वाली फॉर्म यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो लेट मी एक्चुअली शो दैट टू यू। ये हमारे पास फॉर्मूला शीट में लिखी होती हैं 3 डिफरेंट फॉर्म्स। आई एम यूजिंग दिस वन हियर एंड माय लॉजिक इज that since I have sine here and sine here, that's going to become sine square, and this is called sine square into cos आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं sine square ले आऊँ तो मेरे पास sine square into cos आ जाएगा, and that's going to be helpful. Okay? अगर आप कोई और भी फॉर्म लिख देंगे तो आप eventually आपको यही करना पड़ेगा, उसको दोबारा से चेंज करके आपको इसको लेकर आना पड़ेगा। That's fine. That's just going to take a couple of more steps if you happen to do that, but that's also fine. Okay? So cos 2x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? I'm going to write that identity on the side here. Cos 2a equals 1 minus 2 sine square a. ये वाली आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। So this is 1 minus 2 sine square x. Okay. अच्छा, let's simplify this. We have minus 4 sine square x into cos x plus cos x minus 2 sine square x into cos x. Okay. What happens now? We have minus 6 sine square x cos x. Right? These are like terms. इन दोनों को हमने add कर दिया. Plus cos x equals 0. Now we have to solve this. We can take cos x common. And that gives us minus 6 sine square x plus 1. And that equals 0. So we have either cos x equal to 0. It's a product, right? If product 0 is इसका मतलब है कि either cos x equals 0 or minus 6 sin square x plus 1 equals 0. इन दोनों में से एक चीज 2 होनी चाहिए। अब एंगल देख लेते हैं हमारे पास क्या होना चाहिए। इसने कहा 0 से लेकर π/2 के दरम्यान में 0 और π/2 इंक्लूडेड है। cos 0 कहाँ पर होता है? cos 0 आपके पास π/2 के ऊपर होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे आ सकती है π/2। बट इफ यू लुक एट द ग्राफ, π/2 तो इधर आ रहा है, तो m तो ये नहीं हो सकता, m π/2 तो नहीं हो सकता, राइट? सो यू से दिस इज नॉट पॉसिबल। m के x कोऑर्डिनेट तो ये नहीं है, हम m फाइंड कर रहे थे, तो m तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमें कुछ नहीं मिला। दूसरे से हमें क्या मिल गया? साइन स्क्वायर x इक्वल्स, ये 1 दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, इट बिकम्स 1/6. नाउ वी टेक स्क्वायर रूट। Remember, whenever we take square root, we have to put plus minus. यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो। The reason for that is आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन पॉजिटिव होना चाहिए, but in general, whenever you take square root, you have to put plus minus. 1/square root is 6. But then यहाँ पे क्योंकि आपको पता है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की कंसीडर करोगे, नेगेटिव नहीं कंसीडर करोगे। Now we find the basic angle. Sin alpha equals 1/square root of 6. उससे आप बेसिक एंगल फिगर आउट कर ले। Remember, रेडियंस में आपका एंगल है। Let's figure this out. ये देखते हैं हमारे पास क्या आता है। Sin inverse of, so let me just change my calculator mode first. Radians, sin inverse of 1 divided by square root of 6. This gives me 0.4205. ये मेरे पास बेसिक एंगल आ गया। Now since I have to be in the first quadrant only, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई डायरेक्टली? x is equal to 0.4205. ये एक्चुअली 053 आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, सो उसमें देख लेते हैं उसने क्वेश्चन के अंदर कुछ कहा हुआ है। उसने कहा 3 significant figures. You want exactly 3 significant figures. ठीक है, so you have to follow that instruction. That's necessary. तो 053 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होएगा? 3 significant figures तक it's going to be 0.421, and that's your value for x. आप यहाँ पे देख लें 0.421, π/2 is basically 1.5 something, तो देख लें 0.421 तकरीबन यहाँ पे आ रहा होगा। तो graphically it makes sense, मतलब कोई बहुत ज्यादा ऑफ नहीं लग रहा आपको। It's going to be all right. Okay, so that's the value of x that we've got, 0.421. Let's move on. Let's move on to the next one, the last part of this.
It says using the substitution u equals cos x, find the area of the shaded region enclosed by the curve and the x-axis in the first quadrant, giving your answer in simplified exact form. आप देखें ये shaded region है, इसको ये figure out करना है. लिमिट चाहिए आपको, एक तो जीरो लिमिट आ गई, दूसरी लिमिट आपके पास नहीं है, तो पहले तो लिमिट फाइंड कर लेते हैं. लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? We've got this equation of the curve, we put that equal to 0, and we can find the x intercept from that. So let's do that first. पहले तो लिमिट फाइंड कर लें. Y equals sine x into cos 2x. That is what the curve is. We put this equal to 0, and that gives us 0 equals sine x into cos 2x. Now that means either sine x equals 0 or cos 2x equals 0. Sin x equals 0 कहाँ पर होएगा? इंटरवल के अंदर देखना 0 से लेकर पाई 2 तक sin x equals 0 आपका होगा x equals 0 के ऊपर. अब ग्राफ पे देखें 0 तो आपके पास ऑलरेडी है, वो तो नहीं चाहिए हमें, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए. सो वी इग्नोर दिस, ये नहीं चाहिए हमें, वी इग्नोर दिस. cos 0 कब होता है? cos 0 इस इंटरवल के अंदर 0 से लेकर पाई 2 के अंदर cos 0 कब होता है? cos 0 होता है पाई 2 के ऊपर. ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसमें आप बेसिक एंगल निकाल के सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही सब की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. जैसे 2x इक्वल्स पाई ओवर 2 एंड देन x इक्वल्स पाई ओवर 4. ये आपकी लिमिट आ गई यहाँ पे. दिस इज सपोज टू बी पाई ओवर 4. लिमिट्स आ गई. अब आपने क्या करना है? एरिया फाइंड करना है. एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया बिटवीन अ कर्व एंड द एक्स एक्सिस. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर दैट? Let's do that on the side here. Ax equals integral of y dx. ये आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है? Let's actually just do it below there. That's going to be okay. Ax equals integral of y dx. ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है. लिमिट्स क्या है? 0 से लेकर pi over 4 तक. Now what's your function? It's sin x into cos 2x. Let's write that down here. आपको ये इंटीग्रेट करना है sin x into cos 2x with limits 0 to pi over 4. Okay, you're given that you have to use this substitution. तो आपको ये substitution use करनी है, ये use करना जरूरी है. इसका बगैर वैसे भी आप करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ होगा. आपको वही यूज करनी है. आप यहाँ पे लिख लें u equals cos x. ये substitution इसने कहा यूज करने के लिए. अब क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. du over dx. cos का डेरिवेटिव इज माइनस sin x. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या आ गया? इसको dx पे सब्जेक्ट बना लें. वी गेट माइनस du over sin x. ये आपके पास dx की जगह जो रिप्लेस करना है वो आ गया. दिस इज सपोज्ड टू बी dx है, राइट? dx होना चाहिए था यहाँ पे. ओके, ये आपके पास आ गई इनकी वैल्यूज u एंड dx. ये दो चीजें आपके पास आ गई. लिमिट्स भी आपको चेंज करनी है, वो भी आप यहीं पे कर लें साथ ही. लिमिट्स आपके पास अभी क्या है? x equals 0 एंड x equals pi over 4. u क्या हो जाएगा? cos of 0. cos of 0, what is that going to be? That's going to be 1. ये आपके पास 1 आ गया. यहाँ पे cos of pi over 4. cos of pi over 4, what's that? And that's 1 over square root of 2. Just square root of 2 over 2. You can just verify that from a calculator. You should have a calculator that allows you to do this. ताकि आप वो verify कर सकें. Even if you remember the values, it's going to be u equals square root of 2 over 2. That's this other limit here. ठीक है, ये आपके पास दोनों लिमिट्स आ गई. अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे. अब क्या करना है? वो रिप्लेस करने के लिए cos x तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे, कहीं पे cos x तो है ही नहीं कहीं पे. तो क्या करें? एक तो ये डबल एंगल को पहले चेंज करें. cos 2x की जगह, क्योंकि आपको क्या करना है? आपको cos x वाली सब्स्टिट्यूशन लगानी है ना. तो अब इन तीनों फॉर्म्स के अंदर से, जो तीनों फॉर्म्स आपके पास है यहाँ पे, नाउ वी शुड बी यूजिंग दिस वन, ताकि वो cos की टर्म्स में कुछ आ जाए जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकें. ठीक है, तो हम ये वाले मैं फॉर्म यूज करूंगा यहाँ पे. I'm going to write that here again. Cos 2a, that's equal to 2 cos square a minus 1. This is the identity that I'm going to use here. And this becomes sin x into
2 cos square x minus 1 dx. ठीक है, अब बिफोर वी एक्चुअली डू एनी सब्स्टिट्यूशन इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. साइन एक्स को तो अलग लिख रहे हैं. सो एक आपके पास आ गया 2 sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx. एक तो ये इंटीग्रेशन होगी. दूसरी टर्म sin x इंटू -1, दैट्स जस्ट माइनस sin x. इसको तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो इसको आप बेशक अलग से रख लें, इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लें. साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉस एक्स का, वो बाद में कर लेते हैं. अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई, इसमें सब्स्टिट्यूशन डाल दें. क्या सब्स्टिट्यूशन इनपुट करेंगे? कॉस एक्स की जगह पे यू डाल दिया. ओके, लेट्स डू दैट. कॉस एक्स की जगह पे यू डाल दिया, दैट बिकम्स यू स्क्वायर. साइन को तो नहीं कुछ कर सकते अभी हम. डी एक्स की जगह पे क्या डाल दिया? माइनस डी यू ओवर साइन एक्स. माइनस डी यू ओवर साइन एक्स. अब इससे क्या होगा? आपकी कैंसिलेशन होगी. साइन एक्स देगा कैंसिल. दूसरा इंटीग्रल आपको पता है, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रल इज माइनस कॉस एक्स. वी हैव माइनस इनटू माइनस कॉस एक्स हियर. And then what you can do is you can just yeah, so now you've got to be a bit careful here. थोड़ा सा careful, क्योंकि देखें एक ये x की टर्म्स में आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास x की टर्म्स में है, ये u की टर्म्स में आ रहा है. ठीक है, एक चीज x की टर्म्स में, एक चीज u की टर्म्स में. u वाले के अंदर u की लिमिट्स डालेंगे, x वाले के अंदर x की लिमिट्स डालेंगे. ठीक है, ये थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना. अगर आप इसको अलग अलग इस तरह से कर रहे हो, आपने ये ध्यान रखना है कि लिमिट्स आप सही डाल रहे हो. ठीक है, I'm just going to do that in the next step. मैं स्क्वायर से लिख लेता हूँ पहले. I've got 2u square, एक माइनस भी आ रहा है यहाँ से, माइनस 2u square du, एक ये इंटीग्रल आ गया, प्लस cos x. cos x पे लिमिट्स क्या लगी हुई हैं? x की लिमिट्स हैं. x की लिमिट्स क्या है? 0 से लेकर π/4 तक. वो लिमिट्स, x की लिमिट्स यहाँ पे वैसे रहेंगे. u की लिमिट्स में यहाँ पे डालूंगा इसको इंटीग्रेट करके. ठीक है, माइनस 2u square का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस 2 तो वैसे ही रहा, u क्यूब ओवर 3, ये आपने इंटीग्रेट कर लिया. इसमें लिमिट्स आपकी आई पाई से 0 से लेकर π/4 तक. x वाले के केस के अंदर u वाली लिमिट्स आपकी क्या आ गई? जब हमने यहाँ पे इवैल्यूएट की थी, 0 की जगह पे 1 आ रहा है, 0 की जगह पे 1 आ रहा है, नीचे 0 लिखेंगे, सॉरी नीचे 1 लिखेंगे. π/4 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2/2. अगर तो उसने कुछ प्रूव करने के लिए कहा हो ना आपसे, तो आप कभी कभी उनके ऊपर वाला नंबर जो है 1 से छोटा है. अगर उसने कुछ प्रूव करने के लिए कहा हो ना, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो. आपको पता होना चाहिए रूल, एफ ऑफ एक्स. अगर आपके पास कुछ ऐसे लिमिट्स हैं, कुछ भी अंदर है आपके पास, इट डजंट मैटर. जैसे लिमिट्स आपकी हैं 5 से लेकर 3 तक, उसको आप लिख सकते हो माइनस एफ ऑफ एक्स, और लिमिट्स आप इंटरचेंज कर दो, 3 से लेकर 5 तक कर दो. यू कैन डू दैट. अगर उसने कुछ प्रूव करने के लिए कहा हो, यहाँ पे जरूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू डू दैट. आप डायरेक्टली इन लिमिट्स इनपुट कर दें, बस ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट आपने माइनस करनी है. यू कैन जस्ट डू इट डायरेक्टली, इसमें कोई मसला नहीं है. लेट्स डू इट. एक दफा स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 डाल दें. जिसमें मैं क्या कह रहा हूँ, -2/3 बाहर लिखने लगा पहले, जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स. बार बार नहीं लिखना पड़ेगा. -2/3 में बाहर लिख रहा हूँ, कांस्टेंट ही है ना. अंदर मेरे पास आ गया u क्यूब, और लिमिट्स क्या है? 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 तक. ठीक है, अच्छा. दूसरे में मैं लिमिट्स इनपुट कर देता हूँ. cos ऑफ π/4 माइनस cos ऑफ 0. What do we get from this now? -2/3, इसमें लिमिट्स डाल दें. स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 का होल क्यूब -1 का क्यूब प्लस cos π/4. What's that? Cos π/4 is again square root of 2/2. Cos of 0 is 1. Let me just confirm this as well. Cos, just to make sure,
cos of pi divided by 4 is square root of 2 over 2 and cos of 0 should be 1. That's okay. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है. उसने आपसे क्या मांगा था? उसने कहा था सिंप्लीफाइड एग्जैक्ट फॉर्म, डेसिमल में नहीं लेके जाना, एग्जैक्ट फॉर्म में चाहिए. यहां तक आपको जैसे 4 मार्क्स तो मिल गए out of the 5, but now you've got to earn that last mark as well. ये आप कैलकुलेटर पे स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट कर सकते हैं. अब ये चीज कैलकुलेटर में डाल दें पूरी, you get some result from that and that's okay. -2 over 3 square root of 2 over 2, ये आप कैलकुलेटर में डाल दें, इसका क्यूब कर लें कैलकुलेटर के ऊपर ही. मुझे कैलकुलेटर दे रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 over 4 -1 plus square root of 2 over 2 minus 1. Let's simplify. I get -2 square root of 2 over 12. You multiply कर दिया -2 over 3 अंदर, plus 2 over 3 plus square root of 2 over 2 minus 1. ये कैलकुलेटर पे evaluate कर लें अब ये पूरा और देख लें आपके पास क्या आ जाता है. That's going to be the final result. Let me do it. -2. अच्छा ये तो cancellation भी हो रही है यहाँ पे. ये 6 बच गया. जब कैलकुलेटर में evaluate करता हूँ मेरे पास क्या आ जाता है? minus square root of 2 divided by 6 plus 2 divided by 3 plus square root of 2 divided by 2 minus 1. I'm getting -1 plus square root of 2 whole divided by 3. That's your answer. That's your final result, and you can get this as the final result. U in cos x and use limits of U. Let me see that here. Yes, you could do that here. Integrate करने के बाद जब आपने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर if you want you can input this as U और फिर आप U की लिमिट्स इसमें डाल सकते हैं. That's possible. You'll get the same result from that. That's also fine. कर सकते हैं आप, ठीक है? All right, so that's your final result and that completes our paper. So that's it. That's it for today. I hope this was helpful. I wish you all the best for your exam. And hope I think most of you will okay, I'm sorry. Yeah, so I think most of you will have this as the most advanced math paper that you have in your life. उसके बाद आप शायद maths दोबारा नहीं पढ़ रहे होंगे. A lot of you, even if you do study it later, वो इतनी ज़्यादा जो है complexity problem नहीं होगी. But I hope you have enjoyed this journey of studying A-level maths. I hope you've done it the proper way. अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने थिंकिंग स्किल्स आपने डेवलप किए हैं जो आपको फिर आगे लाइफ में आगे इन जनरल भी काम आएंगे. अगर आपने मैथ नहीं भी यूज करना, जो आपकी थिंकिंग स्किल्स से डेवलप होते हैं, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी अब डेवलप होती है, दैट रियली हेल्प्स यू इन अदर फील्ड्स एज वेल लेटर. सो आई होप यू हैव डन इट दैट वे and it helps you later as well. I wish you all the best for the exam. Allah Hafiz everyone. If you have any questions, anyone, you can let me know, but I think you can just relax now. You have 2 hours to go. Have maybe a quick nap while you are traveling to the exam center, just to be refreshed a bit. If you can do that, अगर बहुत ज़्यादा anxiety नहीं हो रही, just keep one advice in mind. आपने किसी question पे stuck नहीं होना एग्जाम में. पेपर 3 के अंदर टाइम मैनेजमेंट सबसे मेजर इशू होता है. ऑफ कोर्स along with the difficulty of the questions, टाइम मैनेजमेंट पेपर 3 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो आपने किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल स्टक नहीं होना है. If you can't figure something out, move on, come back to that later. जब आप वापस आएंगे, you'll have a fresh perspective and you'll find it easier to figure that out when you come back to it later. So skip questions when you are not able to understand them in the first few minutes. That's okay. End पे वापस आएं ताकि आपके आसान questions नहीं रह जाएं. All right. That's it. I'll see you again maybe some other time. Allah Hafiz everyone. All the best.